Hello friends, welcome once again. Now, I showed you this letter in the last video also. In this letter, in the para 2H, it writes low perception of number of figures and gender. I'll add a couple of more things. Actually, low perception is ज़्यादा, the problem is low observation or poor observation. बिकॉज अगर आप पिक्चर को सही तरीके से ऑब्जर्व ही नहीं करोगे तो सही तरीके से परसेप्शन कैसे होगा. परसेप्शन फॉलोज ऑब्जर्वेशन. तो अगर ऑब्जर्वेशन ही गलत हो गया तो परसेप्शन गलत हो जाएगा. ड्रेस का ध्यान नहीं देते, बैकग्राउंड का ध्यान नहीं देते, इमोशंस का ध्यान नहीं देते, रिलेशनशिप की समझ नहीं दिखाते. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी करेक्टेड एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर योर पुअर परफॉर्मेंस इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो इससे पहले मैं आगे जाऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने AFOSOP चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद द फ्रेंड्स इफ यू लाइकिंग इट एंड डू पोस्ट योर कमेंट्स अगर आपको ये अच्छा लग रहा है. यू नो दैट विल बी एनकरेजिंग टू मी. एंड AFOSOP का एक 40 पेज का न्यू PDF इज अवेलेबल एंड यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे लिंक दिया है, उसको क्लिक करोगे तो you can get that 40 page AFOSOP handout. Kindly share it with your friends also. So आज मैं ये लो परसेप्शन से पहले जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बात करूँगा. इनफैक्ट आई विल गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन कि आपने TAT के पिक्चर्स को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है. बिकॉज अगर आपका ऑब्जर्वेशन गलत हो गया तो उसके सब्सिक्वेंट जो एक्शन है परसेप्शन वही गलत हो जाएगा. तो मैं इसी पिक्चर को ले रहा हूँ दोबारा, पहले भी इस पिक्चर को लिया हुआ है. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस पिक्चर. इसके ऊपर अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज वी ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस पिक्चर. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इज ऑब्जर्वेशन स्किल. Now this picture is what is presented to you by the psychologist and you are expected to get the details of this picture clearly and that skill is called observation skill. TAT में thematic अपर्सेप्शन बोलते हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. परसेप्शन विल ओनली हैपन वंस द पिक्चर इज क्लियरली ऑब्जर्व्ड. एंड ऑब्जर्वेशन स्किल का अगर छोटा सा डेफिनेशन की पर्पज से है तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज ऑल 5 ऑफ योर सेंस परसेप्शंस टू रिकग्नाइज, एनालाइज एंड रिकॉल योर सराउंडिंग. यहाँ पे 5 सेंस परसेप्शन से पिक्चर के लिए ओनली आपका आईज यूज होगा. सो द आईज को यूज करके आपने पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, ना कि सी करना है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीइंग द पिक्चर एंड ऑब्जर्विंग द पिक्चर. सीइंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस व्हेयरएज ऑब्जर्वेशन इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. तो मुझे सीइंग एंड ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना. अगर ये पिक्चर आपकी आंखों से सही तरीके से इनपुट ही नहीं हुआ तो आपका माइंड एंड इंटेलेक्ट ने जब इस कॉम्बिनेशन को प्रोसेस करना, वो प्रोसेस में डिस्टॉर्शंस हो जाएगा बिकॉज इनपुट ही सही नहीं हुआ. तो आई विल शो यू हाउ टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इस पिक्चर को ऑलरेडी ऑब्जर्व किया होगा और मैं अभी बताऊंगा कैसे इसको ऑब्जर्व करना है. और उसके बाद आप कमेंट्स में बताना कि आपके ऑब्जर्वेशन में और जिस तरह से मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ इन दोनों में क्या फ़र्क आया. इसका कमेंट्स में बता के लिख के बताना सो दैट यू नो कि व्हाट करेक्शन नीड्स टू बी डन एट द लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन. दैट्स अ फर्स्ट स्टेप. परसेप्शन विल फॉलो दैट. एंड अगर मुझे एडिक्वेट कमेंट्स मिला तो देयर आर लॉट ऑफ कमेंट्स जो मुझे बोला गया कि सर किस तरह से सही तरीके से इमेजिन करना है, सोचना. आफ्टर ऑल TAT इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन. दैट ऑल्सो आई विल डू प्रोवाइडेड आई गेट एडिक्वेट कमेंट ऑन दिस पिक्चर. एंड इफ यू से कि यस सर इसके नेक्स्ट स्टेप को भी मुझे चाहिए तो आई विल पुट दैट वीडियो ऑल्सो इन द सब्सिक्वेंट वीडियो बेस्ड ऑन योर कमेंट्स. सो लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली एंड आई विल डिस्क्राइब इट. मैं बोलूँगा मुंह से कि कैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और आप उसी तरीके से जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से पिक्चर को ऑब्जर्व करना एंड देयर आफ्टर हर पिक्चर को उस तरह से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना. एंड आई एम श्योर यू विल इम्प्रूव योर ऑब्जर्वेशन स्किल. सो लेट्स सी हाउ टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर. Okay, if you look at this picture carefully, you can see there are 2 characters, one male and one female. Both of them in their early 20s, probably 22, 23 in that bracket. The male is formally dressed. He's wearing a trouser, shoes and a full shirt, well groomed.
and the girl is wearing a top जिसमें half sleeves है. There are frills on the sleeves and on the bottom. She's wearing a trouser kind of a thing which has again got frills below. She's wearing a slipper. Her hairs are bob cut, small, है ना, and she has उसका बंद गला पहना हुआ है, and she's crying. Her right hand is closer to her eyes. The boy is standing very close to the girl, indicating that the girl and the boy knew each other. They are not strangers. The left hand of the boy is probably holding the right hand of the girl, or maybe he's touching at the back of the female. That shows that there is certain degree of comfort between these two characters. They appear to be standing in a park. You can see there is a big tree trunk behind the boy. You can see the leaves above his head. Next to the boy there is a plant, probably with flowers. Similarly, at the extreme bottom right corner next to the girl, again there are some plants, some flower kind of thing. Immediately behind the girl there appears to be a fountain which is active right now. You can see the circular rim of the fountain, the water probably flowing. Behind you can see a concrete building, a small building, not definitely hut, a cemented structure, not very big but a small structure. And behind you can see there is cloud. So when psychologists ask you what led to the situation, essentially the psychologist wants to know who is this girl, who is this boy, what is their relationship, why this girl in her early 20s or whatever age that you perceive is crying in front of this boy, what is the reason because of which this girl is crying, and why this girl has to cry here in the park in open, and who is this boy with whom she is sharing her issues. This girl is in early 20s, so the reason for her crying has to be appropriate to that. It cannot be simply कि exam में fail हो गया, because then it becomes age inappropriate behavior. The proximity of the boy to the girl indicates that they know each other. The question is, where is this boy coming from? Why they met here in the park? There are so many things to be understood. And the second part, what is currently happening, depending upon whether you're male or female, and having understood the problem, nature of problem because of which this girl is crying, what likely actions or the problem solving step collectively they're going to take, and in the last part, where will this problem end? What is the final outcome? These are the input that we want to understand from you. And having seen this, we'll like to see what kind of a character qualities are being reflected by both the characters and the main character who is going to handle this issue once the situation is clearly spelled out. So we'll see all these things in your individual responses, and then we have a discussion on that. So मुझे उम्मीद है जिस तरह से मैंने डिस्क्राइब किया उससे आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे डेप्थ में इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना, और ये पूरा चीज़ करने के लिए आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड है. सो इंस्टेड ऑफ कैजुअली लुकिंग एट दिस पिक्चर, यू हैव टू ऑब्जर्व, एंड ऑब्जर्व इज योर एबिलिटी टू यूज योर सेंस परसेप्शन. जब तक आप पिक्चर को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं करोगे, दिस पिक्चर विल नॉट गो इन टू द वर्ल्ड इनसाइड. एंड इफ यू डोंट इनपुट the picture correctly in the world inside, the information processing within you will not be correct, and then आपका response भी फिर affect हो जाएगा. So ज़रूर मुझे कमेंट लिख के बताना, और मुझे ये बताना कि जिस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे करने के लिए बताया, इसमें क्या डिफरेंस लगा, and do you feel there is some improvement required in the way you're observing these pictures.
और किस किस लेवल में, फिजिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल में एंड वैल्यू क्लैरिटी के लेवल पे क्या समझ में मुझे बताना. एंड बेस्ड ऑन योर फीडबैक आई विल सी कि once this picture is inputted, how do you imagine and perceive things, create that cause effect relationship, कैसे what led to the situation करना, कैसे what is currently happening करना, कैसे what is the final outcome, इसको अपनी मानसा में कैसे create करना है, so that once that clarity is there within you, now you can write it using your pen and bring that clarity on the outside. So external clarity will only come when you're internally clear. एंड इंटरनल क्लैरिटी से भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पिक्चर को सही तरीके से परसीव करो. सो देयर इज अ होल सीक्वेंस इन विच यू आर बिल्ट अप. सो जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना कि आज के वीडियो से क्या समझ में आया. इसके अलावा अगर आपको भी इस टाइप का फुल साइट टेस्ट असेसमेंट और उसका वीडियो बेस इंटरैक्शन मेरे साथ करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर फॉर दिस सेम 9090099035 पर और या उसके नीचे दिए गए नंबर पे कर सकते हो. एंड काइंडली शेयर इट विद फ्रेंड्स. 500% क्लैरिटी, नॉट ओनली क्लैरिटी, यू विल एग्जैक्टली नो किस स्टेप में आपका गलती हो रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन के लेवल पे हो रहा है, ऑब्जर्वेशन में भी किस लेवल पे हो रहा है, क्या इमोशंस का डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा है, या डिसीशंस में कॉन्फ्लिक्ट है, या इमोशनल फ्लक्चुएशन को हैंडल नहीं कर रहे. वैल्यू क्लैरिटी कहाँ पे पिन पॉइंट करके मैं बताऊंगा where is it happening, and you will also know how to correct it. So do register for this full psych test assessment test. You can take it on any day as per your convenience, and जो discussion है उसके लिए I and me you can coordinate and we can fix up a convenient time so that we can do that discussion. 500% clarity guaranteed. इसके अलावा अगर आपको 2 weeks का composite batch join करना तो fresh batch starts every Monday. तो किसी भी month का Monday को लेना, कोई भी Monday, and just give us a call, check and see whether the seats are available and you can book it. So I'm not giving you any dates. Every Monday fresh batch starts. So do register for the same. You can send us a WhatsApp message on 9090099035 or also you can give us a call on this number 77986 47177 and we will get back to you with the details. Kindly share this information with the friends. For 500% clarity, do join us. And गैप एनालिसिस वर्कशॉप भी है 5 सितंबर टू 9 सितंबर. उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो. यू कैन व्हाट्सएप अस एंड विल शेयर यू द डिटेल्स. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.